Okay, so I welcome you all to the lecture 15 on our course for course of heat transfer for chemical engineers. In the last class, we discussed about the epsilon NTU method, and we uh, also solved one numerical on it and saw how the problem which is solved by delta T LMT method and the same problem when solved by epsilon NTU method are giving roughly the same values. तो आई होप यहाँ तक सबको चीज़ें क्लियर है। तो कल के क्लास में एप्सिलॉन एनटीयू का मैंने एक होलिस्टिक पिक्चर आप लोगों के सामने दिया, जिसमें मैंने ये कोशिश की कि आपको एप्सिलॉन एनटीयू कब यूज़ करना है, रेटिंग प्रॉब्लम में यूज़ करना है। क्यों करना है? क्योंकि उससे चीज़ें आसान हो जाती है। कैसे यूज़ करना है वो बताया, एंड क्यों यूज़ करना है इसका एक मोटिवेशन दिया। तो आ, मैं हमेशा यही मानता हूँ कि फर्स्ट एक मोटिवेशन समझ में आना चाहिए, एक बिगर पिक्चर दिखना चाहिए, एंड देन वी गोइंग टू मैथ्स। आप लोग मैथ्स कहीं से भी पढ़ भी सकते हो अगर इफ समवन इज दैट हाईली इंटरेस्टेड इन इट। सो आफ्टर यस्टरडेज प्रॉब्लम आई एक्सपेक्ट तीन चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फर्स्ट वन, what is a rating and sizing problem? Second thing, delta T LMTD versus epsilon NTU method, which is the highlight of yesterday's discussion. And third thing, that you can now appreciate कि the values or the solution remains the same। मतलब ऐसे कुछ फाइनल वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा है दोनों की वजह से, वो बोथ आर द सेम वेज ऑफ डूइंग इट। सो आई होप दिस इज pretty much clear to you, but some problems would be still in your mind कि problems that were unanswered yesterday, कि ये epsilon as a function of NTU CR and flow arrangement ये मैंने बोल दिया, and then I had directly given you some expression for epsilon as 1 minus exponential times minus NTU into 1 plus CR over 1 plus CR for the case of parallel flow डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। सो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है कि हाउ डिड वी गेट दिस इक्वेशन? Is it empirical? Okay. Then the next question that can come to your mind is what is the significance slash meaning, physical meaning or interpretation of NTU? हम लोगों ने डिफाइन तो कर लिया NTU का, बट ये क्या है? एप्सिलॉन का काफ़ी कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इफेक्टिवनेस है, यू कैन एफिशिएंसी है, सिंपली यू कैन सी इट, एंड वी हैड अ गुड डिस्कशन ओवर इट। एंड the third thing, what are the limits on NTU, epsilon, CR and limiting conditions for them? क्या होगा कि ये किस केस में ये होगा, ज़ीरो हो गया तो क्या होगा, ये NTU कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऑल राइट, सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट is the main agenda of today's discussion, and before going to this point
I would like to also emphasize on how did we get this expression. So you see, for any science, mathematics is the language of it. वी स्पीक एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मैथ्स, क्योंकि वो क्वांटिफाई करता है चीज़ों को. जब चीज़ें क्वांटिफाई हो जाती है तो समझने में आसान हो जाता है एंड थिंग्स बिकम मच मोर क्लियरर. But at the same time, holistic picture and overall understanding is also that important. So कल हम लोगों ने चीज़ें अंडरस्टैंड की, आज हम एक्चुअल में उन्हें सॉल्व करेंगे. ऑल राइट, हैविंग सेड दिस, मैं आपको एक स्मॉल क्या बोलते हैं स्पॉइलर दे देता हूँ कि एप्सिलॉन एनटीयू मेथड इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द फंडामेंटल लॉज. ये कोई एम्पेरिकल एक्सप्रेशंस नहीं है. दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द फंडामेंटल लॉज. जैसे हमने डेल्टा टी एल एम टी डी कहाँ से निकाला था, वो फंडामेंटल लॉज को यूज़ करके ही लाया था ना. कंजर्वेशन इक्वेशंस यूज़ किए थे हमने अक्रॉस द लेंथ एंड देन वी सॉल्व इट. तो हमने ये टेम्परेचर प्रोफाइल्स निकाले थे ऐसे, फिर हमने ये एक एरिया ले लिया ऐसा, इधर का डी एरिया लिया एंड देन उस डी एक्स लेंथ विच इज़ एट एक्स वी इंटीग्रेटेड इट ओवर द होल लेंथ एंड देन फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी एम विच वॉज कमिंग आउट टू बी डेल्टा टी एल एम टी डी. तो वो भी एक फंडामेंटल लॉ के ऊपर से ही आया था, फंडामेंटल या फिर बेसिक कंजर्वेशन इक्वेशन से. ये भी वहीं से आने वाला है. कैसे, विल सी दैट टुडे. सो let's start mathematical understanding. Of epsilon NTU, and first we'll develop expression for this method. So as you know, this is used for solving a rating problem wherein our target is to find Q and outlet temperatures. These are our unknowns. So we'll start by using the definitions. So we know that epsilon is your Q actual over Q maximum. All right, your Q actual is nothing but the heat that has been lost by the hot stream, and this must equal the heat that has been gained by the cold stream. कोल्ड स्ट्रीम ने जितनी हीट गेन की उतनी ही हीट हॉट स्ट्रीम लूज करेगी. सो अगेन यूजिंग मास flow rate times specific heat capacity small c as capital C over here, and suffix C and H for cold and hot stream respectively. So Q actual will be capital CH times the inlet temperature of hot stream minus the outlet temperature of hot stream, which is equal to capital CC times the outlet temperature of cold stream minus the inlet temperature of the cold stream. All right, and we had discussed Q max कैसे होता है. Q max has to be equal to C min times TH in minus TC in. We have discussed this already yesterday. If you have doubt, you can refer to lecture 14. I have stamped it on the video, so you can directly go to that point and revise it. And now if I take the ratio of this Q max and Q actual, I will get the value of epsilon. So what I try to do is I write Q actual in terms of Q max and epsilon using these two particular expressions. So I will be using these two expressions to write the value of Q actual. So this can be now written as Q actual will be epsilon times Q max. So epsilon times Q max. What is Q max? C min times THI minus TCI. Now there are multiple cases for C min. Okay,
So for Cmin, Cmin has two cases. What if Ch is greater than Cc? That implies Cmin is Cc. If Ch has to be sorry, what if Ch is less than Cc? Then your Cmin is Ch. And what if Ch is equal to Cc? So it has to be I mean any of the values. So there are three particular cases for it, and we'll try to incorporate both of these cases over here, and try to solve the equation. Okay, so moving further, your epsilon is equal to I'm using this same equation and trying to rearrange. Now this time I will also incorporate the value of q actual over here, and as I said, there will be two cases coming to picture. So I'll take the first case wherein Ch is less than Cc. So for this particular case, Cmin has to be equal to Ch. Let me write it as case 1. Okay, so since Cmin is going to be in terms of Ch, I will take your q actual also in terms of Ch. So I will use this particular expression for q actual, and I will substitute Cmin by Ch, and try to find out the value of epsilon. So this will now come out to be Ch times Thi minus Tho divided by Ch times Thi minus Tci, which is equal to Thi minus Tho upon Thi minus Tci. So this is the particular expression for epsilon for the first case where Ch is less than Cc. So let's try to understand this particular thing graphically also. Okay, so we are particularly discussing the case where Ch is less than Cc. This is the Thi, this is the Tci. So alright, we'll see it here. So this is the typical line wherein Thi goes to Tho, and this is Tco. I'm talking about counter flow over here. When Ch is less than Cc, for Q max, what will be which temperature has to go? I mean, which graph has to change? Yes, anyone? I mean, what will we do? Like we'll equate something, right? We'll equate say Tc out to Th in, or we equate Th out to Tc in. Yes, anyone? TH not to TCI. Th not to Tci. Yeah. So we kind of
जनरेटर लावता येईल का?